Hi all. So welcome to stream number 6. So this is the first time in our for our YouTube channel. We have completed almost 6 days in a week. तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे और ट्राई करेंगे कि और से ज़्यादा डेली स्ट्रीम आ सके। इससे मेरा रिसर्च बढ़ेगा, मेरे लर्निंग होगी और सेम टाइम आई विल ट्राई टू गिव माय थॉट्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स for you. So, and with your inputs in form of comments, I would like to learn more. Also same time I will try to research more. तो आज का टॉपिक था पूरे दिन, मेनली इट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस ओनली। तो आज थे इलेक्शंस फॉर झारखंड एंड महाराष्ट्र। ऑल्सो देर वॉज टू बाई इलेक्शंस इन वायनाड एंड नांदेड इन महाराष्ट्र एंड केरला एंड महाराष्ट्र। But if you see for both Jharkhand and Maharashtra, the BJP won most of like BJP's have like majority in Maharashtra, and in Jharkhand JMM and BJP also are leading two parties. But in Maharashtra, BJP, Shiv Sena and NCP, they as the Mahayuti, they are forming like ruling party. So they will they will form a government for next 5 years. Also there was assembly constitution. Okay, so these are another few assembly related by elections, but there I'm not sure, I was not aware of this election. So they were like from today's elections, but the most particularly the state was in news is Maharashtra. पूरे दिन देखेंगे हम तो पूरे दिन almost for almost every like TV channel, news channel, we can see what are the results. They each and every minutes they are trying to give new updates. So it started from like postal ballot counting, then for each round they try to give breaking news, like if that like from which party which candidate is trailing, and which from which party which candidate is leading that particular constituency. So it is from say it's from assembly, and the major state as I have mentioned is महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में जो भी मतलब महायुति की सरकार बनी, लेकिन बिफोर दैट देर वॉज like on 20th November the election voting has happened, and after that there was a discussion about the exit poll. And to be from overall social media, I got to know this time no one was wanted to believe like what exit polls are saying, because if you अगर आपको पता है कि जो इसमें मई में जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के लिए, ड्यूरिंग दैट टाइम also there was focus on for exit polls, but the what predicted in exit polls are not matched with exact outcome. So this time only few portion of people or viewers believed in exit poll, but it gives more of entertainment material to TV news channel. So over the time of like 2 days every news channel debated on
exit polls from different agency, and they try to have their like uh, what will happen if Mahayuti or Mahavikas Agadi they form election, they won election and form government. So, but if you can see that in Maharashtra, these are the actual result. This is from uh, Election Commission of India website. I know this is second time we are referring this website, but since these are election days, so uh, बात तो चर्चा तो बनती है, चर्चा तो होनी चाहिए इलेक्शन पे. So this is actual outcome. And earlier there was speculation that current like current ruling party is BJP, Shiv Sena, Congress, BJP, Shiv Sena and NCP, and oppositions are Shiv Sena, UBT, INC, NCP, SP. So there was speculation that UBT, INC, SP, they may they may form the government, they may get more seats, and the हवा बदल जाएगी, रुख बदल जाएगा. Those were kind of discussion happened, but in actual also there were in few exit polls they said that between this group and this group there was a कांटे की टक्कर. But actual result you can see here they have BJP formed landslide like victory. BJP, Shiv Sena and NCP, this Mahayuti forming, they got landslide victory, and they will form the government in upcoming days. And here we can see with this state with you can see for each constituency of this Vidhan Sabha, who was the winner and from which party. You can see here more of detail. So if you click on this, you will get to know like who won from that constituency and who lost from which party, and how much from from how many votes they actually lost, or how many votes they got additional from their opposition. So you will get here more kind of details from this. This is one thing. Then also here we can we have this drop down from where we can see different like instead of clicking that, we can click on this map. We can directly select from this drop down. It's just a normal party wide result or party wide vote share, and that's it for this election related data available for this. But you can see that this voting like results are just came today, and there will be some post result discussion till now. The actual government form, there will be discussion ongoing. So Maharashtra elections, you can see for like on X, the there are trending hashtags you can go through, and these are like जो भी मतलब बातें हो रही है, जहाँ पे भी जो हैशटैग है या फिर जो भी चर्चा में लाइक वर्ड्स है या फिर हैशटैग है, उसके रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं हम लोग. और मोस्ट ऑफ द जो ट्रेंडिंग पार्ट है वो इलेक्शन रिजल्ट के ही है. सो you know there is no need to go for like actual
actually there is no need to go to ECI website. You can directly see the results or more details from TV channels, or you can search from different hashtag. Also you will get like more of emotional related details you can see on TV. There will be more coverage you can see on like YMVA, or which group, or uh, which group is कौन सा ग्रुप जीता है, कौन सा ग्रुप हारा है, कौन से जो गठबंधन है वो हारा है, अलायंस हारे हैं, कौन से अलायंस जीते हैं, क्या हो सकता है, वाई पीपल हैव वोटेड फॉर विच अलायंस, वाई पीपल हैव rejected which alliance. So this kind of discussion you will see more in like in for it will continue for one more week, and then this particular trend will settle down. So जो भी लाइक खास करके चुनाव के दौरान जो भी मतलब इसके रिलेटेड न्यूज़ कवरेज हम देख सकते हैं, वही हम लोग को सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट होते हैं, न्यूज़पेपर में रिफ्लेक्ट होते हैं, टीवी पे रिफ्लेक्ट होते हैं. पीपल पोस्ट अबाउट देयर फेवरेट लीडर और अलायंस और पार्टी, एंड these actual emotions will turn into vote, and the actual this voting जो भी मतलब लोग वोट करते हैं, वो जो वोट करने के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है, ना ही सिर्फ महाराष्ट्र में, लाइक फॉर एवरी स्टेट इट दोज गवर्नमेंट अवेलेबल, लाइक वो गवर्नमेंट अगले 5 साल तक वहाँ पे रूल करती है. तो जब भी हम, मुझको जस्ट यही कहना है कि जब भी हम कुछ इलेक्शंस के रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल रिलेटेड जब भी हम लोग कुछ बातें सुनते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर टीवी चैनल्स पे देखते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी अगर कुछ सुनते हैं तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुद परखिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कि एक्चुअली ये सच है या झूठ है, या फिर कुछ प्रोपोगंडा चल रहा है, या फिर कौन सा अलायंस इसके रिलेटेड कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैला है, खास करके इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम. तो वो ये कीजिए. अदरवाइज जो भी हम लोग जो आजू बाजू के जो चर्चा हो रही, जो ट्रेंड हो रहे, जो बातचीत हो रही है, उसके आधार पे अपना वोट कभी ना दीजिएगा. तो यही एक है, क्योंकि ये पूरा वीक ऑलमोस्ट इसमें इलेक्शंस के चर्चा में, एक्चुअल इलेक्शन में, और बाद में अभी इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके बारे में चल रहा है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, टॉप ट्रेंडिंग पे है. तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो इलेक्शंस होते हैं या फिर उसके जो रिलेटेड रिजल्ट है या फिर उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्रिटिकल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वोट डिसाइड करने के लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर रिगार्डिंग इलेक्शंस, हाउ ट्रेंड्स and how the actual voting we can see. Also you can see like for different regions there are different percentage of like voting happened, so that also matter. And most of the time when voting percent increases, and during that time we can see there is a shift in political party, political power. So that's need to be also keep in mind, because the more people vote, the more people have their share in like better governments, and the more people vote, they it means there are more like
understanding of political related like uh, political parties अधेरेंस टू पीपल, बिकॉज लोग जब ज़्यादा वोट करते हैं तो वो अगर वो वोट करते हैं तो उनके वो गवर्नमेंट या फिर जो नेता है उनके उनको ज़्यादातर इनके लोगों के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं. सो ऑल द मेरा जो टोटल जो टॉपिक का है कि जो अगर कौन सा भी इलेक्शन हो वोट कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वोट के लिए जागरूकता फैलाइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वोटिंग होगी उतना अच्छा गवर्नमेंट बनेगा, उतना अच्छा सरकार बनेगी और जो एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो जीत जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे for our stream number 6. Let's meet and for next stream. Till then, have a nice day. Take care. Goodbye.